हेलो पिला माने समस्त को स्वागत करुच्ची तुम मानकर निजर स्कूल होम स्कूल को। आज जमीती कि कही जे डैफोडिल्स रो क्वेश्चन आंसर। ओके, डैफोडिल्स रो क्वेश्चन आंसर एक्चुअली एटा होची तुम टेक्स्ट बुक रे जो क्वेश्चन आंसर अच्छी से क्वेश्चन आंसर। बाकी जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर तो आउ गोटे वीडियो रे तुम नहीं आसबि, किंतु एबे नुहे आउ 2-4 दिन परे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम बही रे अच्छी देखि परिबो तुम माने। When did the poet see the daffodils? तेन क्वेश्चन आंसर को तुम भल भाव में बुझा को चेष्टा कर। आउ एमती नुहे जे यही क्वेश्चन आंसर ही तुम एग्जाम रे लिखिबो मन रखी घोषी घोषी तेना घोषा को मोटे भी प्रश्न दो ना, तुम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली बुझ तापर जाई तुम मैंने अटेम्प्ट कर निजे खातार लिखिकी कौटी कौन भूल रोची कौटी कौन अर्थर अलग आसूची मीनिंग अलग आसूची तेणु से सब देखिकी तुम मैंने पुणी या फॉलो करके तुम लिखिपर। ठीक अच्छे, डायरेक्ट सब बेले उतारे की घोषिकी लिखा को बिल्कुल भी चेष्टा कर ना, ता द्वारा लैंग्वेज रो वैल्यू नष्ट हो जाए। ओके, तेणु देख द पोएट जे व्हेन डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स केते बेले व्हेन केते बेले डैफोडिल्स को देखिले पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज wandering in the Lake District of England कांगना Lake District तांकर घर। he was wandering alone एकुटिया aimlessly लक्ष्यहीन भाव में घूरी बुलुथले in the countryside। ओके, countryside है गाँ बा देहाती अंचल like a patch of cloud floating in the sky जेमिति गोटे मेघखंड बादल खंड जेमिति आकाश रे भासुची सेमिति का घूरी बुलुथले over hills and valleys। okay, suddenly he came across a host of गोल्डन डैफोडिल्स। हठात किना से किछि डैफोडिल्स मानकर झुंड सहित ग्रुप ऑफ डैफोडिल्स होस्ट ऑफ डैफोडिल्स गोल्डन डैफोडिल्स गोल्डन हेची एडजेक्टिव लगा हेची जे सुनेली रंगर तेनु गोल्डन डैफोडिल्स रो से माने देखि परिले। तापर नेक्स्ट देखो कोन रहिछि जे व्हेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स केउठी देखिले से तो कला केते बेले एबे होछि केउठार देखिले द पोएट लेखा है सीधा सीधा द पोएट वाज वंडरिंग अलोन इन द लेक कोडी ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। ओके, सडनली ही केम अक्रॉस द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स कोडी ना बिसाइड लेखा है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ओके, इन लार्ज नंबर्स दे आर फ्लुटरिंग अर्थ कौन मु काली कही देखिए तुम मैंने मन रखीच कि नहीं मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो। जदि तुम मीनिंग रो वीडियो देखी ना हो एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी ना हो ताले फटाफट जाओ आज जस्ट रिसेंट वीडियो रे मोर अछि तुम ता देखि परिबो। एंड डांसिंग इन द विंड कौन करथले फ्लुटरिंग एंड डांसिंग इन द विंड। नेक्स्ट कौन अच्छी देख फिल इन द ब्लैंक्स गोटे अच्छी स्टैंजा 1 ताको तुम देखिकी एटी लिखि परिबो तेणु मु तळे लिखि देछि ता तुम देखि परुथिबो तुम बही रु मते देखिकी लिखि परिबो। नेक्स्ट what does the poet compare the daffodils with? daffodils को कहा सहित कंपेयर करिसेंती poet? The poet compares the daffodils with large number of continuous star जोटे galaxy रे that shine and twinkle on the milky way galaxy रे जो continuous stars रहिछि stars माने shine करूचंती twinkling करूचंती तांको सहित poet कंपेयर करिसेंती काकू daffodils को। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन what resemblance does he find between the stars and the daffodils? stars और daffodils भितरे कोन कंपैरिजन कला परे से कोन resemblance पाइचंती तांको भितरे सिमिलरिटी कोन पाइचंती देखो रहिछि टिके बड़ हबो आंसर। द points of comparison between the field of daffodils and the milky way are mainly two कौन से दीटा ना गोटे होछि limitless in number। ओके, लिमिटलेस इन नंबर को जेमिति डैफोडिल्स लिमिटलेस थिला जो सीमाहीन भाव रे से लंबी थिला सेमिति का आ गोटे कोन ना दे आर गोल्डन पेटल्स ग्लिटर इन सन रे जेमिति का ट्विंकलिंग करूथले कोन तारा माने ट्विंकलिंग करूथले आ लिमिटलेसली से माने कंटीन्यूअस मैनर रे थिले सेमिति का मिल्की वे रे माने हमरो डैफोडिल्स गोडा मध्य लिमिटलेस नंबर रे थिले आ तांकर पेटल्स गोडा सन रे कोन करूथला ना जिकमिक करूथला ग्लिटर करूथला। The strong breeze they flutter strong breeze रे कोन करूथले ना फ्लूटर करूथले आ appear करूथले। very good, to be twinkling the stars are limitless in the milky way
and they stretch in long लंबा जाए लंबी थिले line from horizon to horizon line from horizon horizon कौन पिला माने दिग्बलय ओके horizon from horizon to horizon अर्थात दिग्बलय रे से बहुत दूर जाए लंबी थिले they are found in abundance abundance ର अर्थ कौन पिला माने प्रचुर ओके abundance ର अर्थ होची अरे हाँ ओके प्रचुर तेणु से प्रचुर परिमाण से माने देखा दउथिले दे आल्सो ट्विंकल ब्राइटली इन द स्काई चकमक करूथिले दैट एज द डैफोडिल्स आर ट्विंकलिंग नाउ बिसाइड द लेक वर्तमान जेमिति से माने लेक पाखरे बा ह्रद पाखरे जेमिति का से माने ट्विंकलिंग करूछंती कि डैफोडिल्स माने नेक्स्ट देखिबा हमें What does the poet say about the number of flowers? Number of flower मानक विषय रे poet कौन कहिचंती obviously जानिछ तुम माने जे the number of flowers the poet says that 10,000 daffodils एका समय रे 10,000 अच्छा ये 10,000 रे गोटे फिगर ऑफ स्पीच को यूज कराई छी ता माने मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी को 10,000 daffodils at a glance आखि पिछुड़ा के से केते देखुतले 10,000 it suggests that there were huge there were large number of daffodils stretching is a never ending line along the margin of the bay ठीक अछि ओके ये सब सीधा सीधा बहिरु ही माने पोएट्री रे ये सब शब्द रही छे ता तो माने काली बुझीथली ता तो माने जानिथिबो आ खाता रे लिखि रखिथिबो बोली मोरे मध्य आशा नेक्स्ट देखो where were the flowers ए फ्लावर गुडा को के उठिथिले the flowers were on the bank of a lake and beneath the trees and along the margin of a बे ठीक अछि केउटी केउटी थिले से माने बैंक ऑफ ए लेक आउ कोटी ना गछ तळे बिन द ट्रीज आउ कोटी ना से जो मार्जिन रे धार रे कहार उपसागर रो धार रे थिले नेक्स्ट देखो which of the two danced more sprightly पिला माने काली मु कहितली कोन मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो जे स्प्राइटली रो अर्थ कोन द waves or the daffodils किए होची अधिक डांस करूथला अधिक स्फूर्तिशील भाव रे डांस करूथला वेव्स समुद्र रे उपसागर रो तरंगमाला ना डैफोडिल्स तेनु ऑब्वियसली पोएट कहिचंती जे बोथ द फ्लावर्स एंड वेव्स डांस्ड इन स्ट्रांग ब्रीज दुई जन जाक डांस करूथले किंतु जे अधिक मन को लोभौथला बा अधिक स्फूर्तिला भाव रे जे डांस करूथला से होची किए अधिक खुशी रे चीयरफुली एंड देन द वेव्स से होची किए द फ्लावर्स से होची डैफोडिल्स danced more sprightly than the waves next देखो how does the poet feel while looking at the daffodils जते बेले daffodils को देखुचंती सेते बेले poet कोन अनुभव करूचंती while looking at the daffodils the poet feels extremely happy बहुत खुशी अत्यंत अपार आनंद से अनुभव करूचंती the he was wonderstruck ओके जिते अद्भुत आश्चर्य होगी सेते बेले से लाखि जाउचंती एंड ओवरफ्लेम्ड अति खुशी हे जाउचंती उत्फुल्लित हे जाउचंती with a sense of great joy to see the host of beautiful flowers ए सुंदर फूल मानन को देखि से ओवरवेल्म हे जाउचंती अति खुशी हे जाउचंती खुशी रे विमोहित हे जाउचंती he was so much enthralled अच्छा ए पिला माने ये तम मानो पई नुवा शब्द enthralled रो अर्थ होची कोन मते के कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी कुहो नले मु लास्ट रे तम मानो को निश्चय कहि देबी ए क्वेश्चन ला लास्ट रे ठीक अछि enthralled the beauty of the daffodils okay that he could not but be gay माने कोन मु बही रे काली पढी थिली ये शब्द in the मेरी माने खुशी मेरी कंपनी सेटा मु तमु काली कोन कहिथिली ना जकॉन्ड कंपनी माने पडुची नाही जकॉन्ड कंपनी त enthralled रो समस्ते कमेंट देइछो जे भी जा देइछो तार अर्थ कोन प्रकृत रे ना चिताकर्षक बा मन को लोभेबा ओके नेक्स्ट जीवा वेरी गुड तापर देखो व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन द काउच जते बेले से काउच बा सोफा ऊपर से पड़ी जाइचंती सेते बेले पोएट कोन अनुभव करिचंती बा कोन घटिची पोएट को प्रति व्हेन देखो बहुत बड़ क्वेश्चन अछि तेने क्वेश्चन व्हेन द पोएट लाइज ऑन द काउच इन vacant
or in pensive ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ନହେଲେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋଫା ଉପରେ ପଡି ଯାଆନ୍ତି the beautiful sight ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କାହାର ନା golden daffodils ମାନଙ୍କର ଆସି ଉଭା ହୁଏ appear alive ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ before his mind's eyes କୋଉଠି ତା ମନର ଆଖିରେ ଆସିଯାଏ or imagination ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ in his imagination he could recall the charming sight ତାଙ୍କ ସେ କଳ୍ପନାରେ ସେ ସେଇ charming ବା ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ recall କରିଛନ୍ତି ବା ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି of the daffodils and his past experience returned to his memory ତାଙ୍କର ସେ ପୂର୍ବ experience ତାଙ୍କ memory ଫେରି ଆସିଛି he saw a spelling ଭୁଲ ଅଛି SAW okay SAW ଟା he saw as if the beautiful daffodils were still dancing merrily अत्यंत खुशी रे कोठी ना along the margin of the bay beside the lake beneath the trees and with the memory of daffodils the bliss of the moments also return to him his mind become kon na calm शांति पड़ी जाइछि तांको मन मुंडरे तांग मन the bliss of solitude एकांतरे जो अपार आनंद moved him greatly तांको अत्यंत खुशी देइछि बा से अत्यंत खुशी रो स्थान को नै जाइछि his heart was immediately filled with तांकर हृदय feel हो जाइछि कोतरे ना pleasure रे खुशी रे and felt like dancing with daffodils और से निजे मध्य से daffodils मानक सहित नाचिबा को आरंभ करिसंती नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो मेंशन टू मूड्स कोन दुईटा मूड जा कि लेखक कविंकर एटी आसीछि the two moods of the poet are mentioned in the last stanza of the poem गोटे होची कोन ना vacant आ गोटे pensive very good okay then केते बेले आसी गोटे होची mood and other one is the blissful mood आ गोटे सेटा कोन ना blissful mood okay the second mood comes when second mood टाइ जो blissful mood टा केते बेले आसी ना the poet observes the beautiful जेते से beautiful daffodils मानको ऑब्जर्व करूचंती पर्यवेक्षण करूचंती in his mind's eyes in solitude next देखो 12 नंबर कोन अछि what does the poet feel poet feel कोन करिचंती when he remembers the sight of the daffodils जेते से daffodils मानको मने पकेइचंती सेते बेले poet कोन feel करिचंती when he remembers the sight of daffodils it fills his entire being with joy his heart began to dance बुझी पालो ना नहीं ना बुझी पाइलोनी अच्छा देखिबा when he remember जेतो से मने पकेइचंती the sight of daffodils को से daffodils मानक दृश्य को it fills या भरि देइची कोन तांकर entire being with joy तांकर संपूर्ण शरीर को खुशी रे भरि देइची his heart तांकर heart begin to dance नाचिबा को आरंभ करिची का सहित ना सेई फूल मानक सहित जदि शॉर्ट रे कोआ जाय the sight of daffodils proves to the source not only immediate pleasure तांको सेई तत्क्षणात खुशी जे प्रदान करूथिला ता ने ता सहित से कोन करूथिला ना लास्टिंग जॉय बहु समय पर्यंत से खुशी मध्य ता संगरे रहउतला जेमिति पोएट सेठी सॉलिटरी परे कहितलेनी जे सुंदर गीत मु सेठु गला परे मध्य म हृदय रे सेमिति स्पंदित होउतला बा बाजुतला सेमिति एठी मध्य से कहिचंती जे ओवरऑल हम जे देखिबा ये थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर ये सुंदरता दृश्य सब दिन पई हमको आनंद प्रदान करू थाए बा सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुतले नुआ दिसु थाए ओके नेक्स्ट देखो 13 नंबर व्हेन डज द पोएट राइट द पोएम बिसाइड और ऑफ द लेक ओके लेक पाखरे बसी की ना लेक रो बाहरी आसी की लेखिचंती ये पोएम टी द पोएम हैज बीन कंपोज्ड का कोडी ना ऑफ द लेक अर्थात लेक रो बाहरी आसी जेते से काउच रे बसी की जेते पेंसिव मोड रे किबा बैकएंड मोड रे बसचंती जेते पुनी से ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड को जाइचंती सेते बेले से पोएट्री कंपोज करिचंती एना लेक साइड रे बसी की कोनोसी प्रूफ एठी देई नाही पोएट्री अकॉर्डिंग टू द वर्ड्सवर्थ इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स या तमे 10th क्लास रे पढिथिलो जेते बेले तमे सॉलिटरी पर पढिथिलो जे पोएट वर्ड्सवर्थ को पई कविताटा कोन ना स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड in tranquility okay तांको पई कविताटा कोन ना स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो स्वतःस्फूर्त भाबे ओवरफ्लो हे कि जो पावरफुल फीलिंग्स गुडा को रिकलेक्ट हेबा स्मृति पटरे
ଆସେ ସେ ବି କେତେବେଳେ ନା ଇନ୍ ଟ୍ରାଙ୍କୁଇଲିଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ବସିଥାନ୍ତି ବା ଶାନ୍ତିରେ ବସିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଆସିକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଦ ଜୟ that the poet had experienced जो खुशी से experience କରିଥିଲେ in the company of daffodils ମାନଙ୍କ ମେଳରେ on the bank of the lake ର କୋଳରେ lake ର କୂଳରେ return to his mind later ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି in his later year ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କାଉଚ ରେ ଅର୍ଥାତ ସୋଫାରେ ସେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ପେନ୍ସିଭ କିମ୍ବା ଭେକେଣ୍ଟ ମୁଡ ରେ beautiful side of the golden daffodils flashes upon ସେଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଇନୱାର୍ଡ ଆଇ ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭରି ଦେଇଛି ଆନନ୍ଦରେ this is what he calls the bliss of solitude ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ନା bliss of solitude ଓକେ ଯଦି ସେ ପଚାରି ତ ମୁଁ କାଲି ହିଁ କହିଥିଲି ଯଦି bliss of solitude what is the meaning of bliss of solitude according to the poet ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ based on that joy he wrote the poem okay next ଦେଖ okay अच्छा ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ରାଇମିଂ ସ୍କିମ୍ କଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଶେଷ ପଦକୁ ମିଶେଇକି ତମାନେ ତମାନଙ୍କ ବହିରେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଶେଷ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ତମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ରାଇମିଂ ସ୍କିମ୍ ଅର୍ଥାତ ସିମିଲାର ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିକି ଆସୁଛି ଯେମିତିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ସାଇନ୍ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନୁହେଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର फर्स्ट लाइन रे तमे देखुछ कोन ना साइन गोटे साउंड आसी ई तापरे पुनी गोटे लाइन छाडी कि आउट लाइन ले देखुछ लाइन ओके पुनी आउट लाइन छाडी तापरे जो चतुर्थ लाइन ले तमे कोन देखुछ ना ग्लांस को देखुछ तापरे डांस को देखुछ तनो ग्लांस और डांस समान सुना जाउछंती साइन और लाइन समान सुना जाउछंती आ वे आ बे ये दिटा मध्ये समान सुना जाउछंती तनो याकू को जाय राइमिंग स्कीम तनो समान अर्थ जो ए समान साउंड को आमे ए बोली नबा तापरे जदी नेक्स्ट अलग साउंड को आमे बी नबा तापरे सी जेमिति जते जते अधिक अधिक साउंड थिबो से अनुसार आमे ताको कंपेयर करी करी जिबा ओके त यार कोन होची एटा ना ए बी सी ओके 6 धाडी अछि प्रत्येक स्टैंजा रे चारिटा स्टैंजा 6 धाडी लेखे काली मु कहितले तनो से 6 धाडी रे एमितिका राइमिंग स्कीम बनिची थर्ड स्टैंजा रे मध्ये एमितिका दे गे ग्ली कंपनी थॉट ब्रॉट तनो ये बनिची सेठी राइमिंग स्कीम तापरे फोर्थ स्टैंजा रे मध्ये सेम लाई is mood solitude feels daffodils okay good next देखो how many times the word dance repeated तेन गणी नबो लिखि देछि पढिनियो जे केते थर वर्ड डांस को रिपीट कराइ इन द व्हिच लाइन इट शोज द हैप्पीनेस हां ये होछि हैप्पीनेस ए जो डांस टा खुशी रे नाचु चंदी सेईटा को लाइन ने व्यवहार कराइ छि सेईटा होछि लाइन 12 रे ओके देखो नेक्स्ट 16 नंबर in which line does it create a sense of harmonious relationship harmonious relationship between daffodils and waves okay daffodils और waves भितर केते बेले से कहिचन जे harmonious relationship create हेछि बोली okay the word dance creates a sense of harmonious word dance ही क्रिएट करछि ना दुई जन जाको नाचुचंती ए रिलेशनशिप का भितर daffodils और wave भितर केउटारे लाइन 13 रे और लाइन 14 रे the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee a line तम बहि रे अछि देखि परिबो तापर 17 नंबर which line does the harmonious relationship include the poet himself तांको सहित आउ daffodil सहित जो harmonious relationship से केते बेले स्थापन करिसंती ता होछि लाइन 17 रे okay the poet become one with the jocund company of the waves and daffodils से दुई जण सहित से जेते बेले रहिसंती से कंपैरिजन करूसंती ओके तेणु से तांको भीतर हार्मोनियस रिलेशनशिप को स्थापन करिसंती पढि नबो किछि नै नॉट इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच ये होछि इंपोर्टेंट पिला माने व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डू यू फाइंड इन द पोएम ओके इन दिस पोएम वी फाइंड figure of speech like simile and metaphor okay तापर मध्ये आमे पाइथिले जे hyperbole भी पाइथिले personification भी पाइथिले ता मध्ये तो माने मेंशन करि परिबो ओके से आउट 19 नंबर रे क्वेश्चन देछि जे simile is a figure of speech that makes an explicit comparison between two unlike things by using कहिथिली मु काली कोन कोन ना लाइक गोटे आ होची एज को लगई की कंपेयर करि थाए जेमिति का आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड एज द लोनलीनेस ये सब पोएट ऑफ द
of the poet resembles the loneliness of clouds जे एकुटियापण को क्लाउड रो एठी दर्शेइचंती कंपेयर करिकि जेमिति क्लाउड एकुटिया से भी सेमिति एकुटिया ता से पचारिछि क्वेश्चन कोन अछि देखो व्हाट अदर एग्जांपल ऑफ द सिमिली डू यू फाइंड इन दिस पोएम सिमिली रो आउ कोन एग्जांपल तमे एठी पाउजो जदि तमे एटा वीडियो को पॉज करिकि निजे टिके बहिरे खोजिबा को चेष्टा करो तापरे वीडियो आसी देखिकि आंसर करिवो द अदर एग्जांपल ऑफ सिमिली कोठी अछि ना लाइन 7 रे अछि ओके जेटा कि लिखा है कौन ना कंटिन्यूअस एज स्टार्स दैट साइन ओके आउ किछि अछि कि सिमिली ताले मते खोजि कि कुहो कमेंट बॉक्स रे नेक्स्ट देखो 20 नंबर मेटाफोर भी एठी यूज कराई छि से कोइछि गोटे मेटाफोर यूज कराई छि ताल ता अनुसार बही रे जो क्वेश्चन दा देछि तार अर्थ कोन व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड बट the poet imagines the happiness brought to him by the beautiful scene flowers as wealth तपई जो सुंदर दृश्य तांको पई गोटे संपत्ति सदृश does he use metaphor here कोन एठी से मेटाफोर यूज करिसंती कि हां एठी से मेटाफोर ही यूज करिसंती तांकर जो ए जो The poet used a metaphor in this line. What wealth the show to me brought. The poet uses the metaphor of wealth to say the amount of happiness. Wealth को कहाँ से तो compare करिसेंती से ना amount of happiness. काली मु कहितली he is tiger in the battle field. then it is a direct tiger से तो compare करा होची without as and like okay the real meaning of the words is different from their literal meaning हाँ कि ना तन टाइगर अर्थ होची बाघ तन एठी literal meaning सहित एठी यार अर्थ होची अलग काहे कि ना एठी टाइगर को साहसिकतार गोटे सिंबल रूप रे व्यवहार करा जायछि here wealth refers to the wealth of happiness एठी wealth अर्थ कोन ना wealth of happiness clear good then very important एटा ओके 10000 काली हम कहितली जे 10000 टे यूज कराइ आज भी कहि जे 10000 टे जो यूज कराइ छि सॉ एट ए ग्लांस एटा होछि एक्सैजरेशन की विल यू कॉल इट हाइपरबोले कोन एको हाइपरबोले कहि परिबो यस हाइपरबोले कहि परिबा ही काहे ना एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट मेड टू प्रोड्यूस द एंड द इफेक्ट upon the somebody or something here the poet wants to give stress on abundance ए जो प्रचुरता ऊपर बा बहुलता ऊपर से इंपोर्टेंस दबा को चाहिचंती जोति पई से 10000 आमे कथार कोनदिनी हजार हजार लोक आस्थिले परा तेनो से जो हजार हजार आमे बहुत गोटे लोक को दर्शाइबा पई आमे व्यवहार करू गोटे एप्रोक्सीमेट नंबर सेइटी एक्सैजरेट करी कहिचंती 10000 क्लियर तेनो सेटा को आमे एक्सैजरेशन अति एक्सैजरेशन हे गले ताको हमें हाइपरबोले कहि थाउ फिगर ऑफ स्पीच बा अलंकारिक भाषा रे तापरे व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज इन द स्टेज इन नेवर एंडिंग लाइन रे जो स्पीच फिगर ऑफ स्पीच यूज करिसंती ता कोन ठीक तमे गेस करिचो जे दे स्टेज नेवर एंडिंग लाइन रे हाइपरबोले ही यूज कराइची अति एक्सैजरेट कराइची देयर मस्ट बी एंड टू द लाइन ऑफ डैफोडिल्स निश्चित भाबरे डैफोडिल्स कौनसी ना कौनसी जगह रे सरी थिबो किंतु से नेवर एंडिंग लाइन कहि दिचंती केबे सरू नथिबा धाडी रे तने एठी हमकु एक्सैजरेशन रो गंध तो निश्चित भाबे तमे माने बारी पारुथबो बट द पोएट सेज एक्सैजरेटिवली दैट देयर इज नो एंड टू द लाइन एठी लाइन ल कौनसी भी अंत नाही ही वांट्स टू कन्वे द आईडिया दैट देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ डैफोडिल्स तने सेठी दर्शाइचंती कोन ना काउंटलेस नंबर ऑफ डैफोडिल्स रहिची ओके एंड हे गला सरी गला तुम मानकर आज क्वेश्चन जदि तुम माने ये वीडियो को शेयर करना ताले संग मानक सहित शेयर करनियो काहे ना तांको पय मध्ये हेल्पफुल हबो आउ जदि तुम पूर्व वीडियो सब देखिना मो फादर बैलेड ऑफ फादर गिलिगन मो आगर मध्ये बनै सारी छि ता तुम माने बहुत हुए तुम प्लेलिस्ट को जाई चेक करना तने तुम जानि परिना किंतु मु निश्चय भाबरे आउ थरे मध्ये नै के आसीबी खूब शीघ्र 2-3 दिन भीतर निश्चित भाबरे नै के आसीबी तापरे हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें आलोचना करिबा कहार जो डैफोडिल्स ता सहित बैलेड ऑफ गिलगन जहाँ जहाँ अच्छे डिटेल्स हमें आलोचना करिबा थैंक यू वेरी मच सेशन वीडियो देखिथिबारु जदि लाइक सब्सक्राइब एसबु करिना हो ताले करि दियो जाकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स तुम मानको आसी जिवो थैंक यू वेरी मच।